रही हूँ। एंड इंस्टाग्राम लाइव सेशन में मेरे साथ बहुत एक्सपर्ट्स होने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी, बिकॉज आई हैव सीन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी इश्यूज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस में, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं करते, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कशन नहीं करते। एवरीबडी इज़ इन टू करियर, बहुत सारे गोल्स हैं, सब कुछ अचीव करना है, लेकिन इसके चलते वी आर फेसिंग सो मैनी इशूज, सो मैनी प्रॉब्लम्स, वो चाहे मेंटल हो, वो चाहे हेल्थ हो, जिसे आई थिंक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एंड विथ ऑल दीज थिंग्स आई थिंक वी शुड स्टार्ट टॉकिंग। और मेरा इंस्टाग्राम लाइव सेशन इन्हीं टॉपिक्स पे होने वाला है विद ऑल दी एक्सपर्टीज़ अराउंड। सो आज का जो मेरा टॉपिक है, एज यू नो, मैंने आपको बताया है, मैंने पोस्ट भी किया है, इट विल बी अबाउट वुमेन्स। महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हर जगह महिलाओं का एक बहुत ही अहम किरदार होता है। इतना ज़्यादा काम करते करते वो शायद थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना भूल जाती हैं। एंड इन दिस इशू कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पे ध्यान देना सबसे बड़ा जो है वो नहीं दे पाती। तो आई थिंक कि अपनी हेल्थ पे ध्यान देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल की लड़कियां, आजकल की महिलाएं जो हैं, ऐसी कई छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रही हैं जो छोटी उन्हें लगती हैं, लेकिन वो शायद आगे जाके बड़ी हो सकती हैं। एंड विद दिस आई एम स्टार्टिंग माई फर्स्ट लाइव सेशन। आज मेरे साथ वुमेन्स हेल्थ एक्सपर्ट हैं, शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर पंखुड़ी मुल्तानी खेमानी विल बी विथ मी। पहले उन्हें इनवाइट करते हैं और उसके बाद हम लोग उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स इनवाइट हर। डॉक्टर पंखुड़ी को मैंने इन्विटेशन भेज दिया है। आप लोग ये बताइए कि Hi, Meenakshi. how are you doing? All good. How are you doing? I'm perfectly fine. सबसे पहले आवाज क्या है? Disturbance तो नहीं है? No, I can listen you. Can you listen me? Someone is saying quiet, some noise interrupting your voice. What? Someone is saying your voice में कुछ interruption है। चलो ठीक है, बाकी जो भी व्यूअर्स ज्वाइन हुए हैं मुझे बता दीजिएगा कि हमारी वॉइस है वो क्लियर है, बिकॉज क्लियर होना बहुत जरूरी है। आज बहुत टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एंड पंखुड़ी यहाँ है, पंखुड़ी के बारे में बता दूं, शी इज डॉक्टर पंखुड़ी मुल्तानी खेमानी, 15 साल से भी ज्यादा काम कर रही है। कहीं ना कहीं को हेल्प करती है और मुझे passionate to work बहुत lactation consultants and support lactation related issues. She's just the founder of Mom Fitness and she is serving the last 15 years. I think लोगों का कहना है कि voice clear नहीं। I think you should take out your earphone. It will be better. Yeah, right. Let me disconnect my earphone. Okay, so now I think clear है। Okay, fantastic. So jumping on to the topic, I think कि मुझे सबसे पहले बात करनी चाहिए। आजकल देखा जा रहा है क्या हो गई या हो गई, सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा बेहतरीन काम कर रही है, चाहे बाहर हो चाहे बाहर हो। Every woman now is studying role। इन सारी चीजों के चलते जहाँ वो नजरअंदाज कर जाती है, छोटी छोटी चीजों को लेकर ऐसी कई प्रॉब्लम्स आगे जाके सही हो जाती है, हम समझ नहीं पाते। राइट, सो अगर हम एक हेल्थ इशू की बात करें, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए,
So, firstly, thank you, Meenakshi, for inviting and having me here. And you are doing a superb job by creating the awareness on these topics because, सिर्फ एक या दो या चार लोगों का ही काम नहीं है. It should be going to masses and spreading out. So, yes, what is health? Health का definition, मीनाक्षी, हर किसी के लिए different है. हर किसी के goals होते हैं. किसी को वेट गेन करने का गोल होता है, किसी को वेट रिड्यूस करने का गोल होता है, किसी को एथलेटिक गोल्स होते हैं, कोई अपना मसल टोनिंग करना चाहता है, उसका वेट ठीक है बस सिर्फ मसल टोनिंग करना है, स्ट्रेंथनिंग करना है. सो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. देयर इज नो सेट डेफिनेशन, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू लुक एट अ पर्सन, दैट पर्सन शुड बी एबल टू डू अपने डेली रूटीन के रोजमर्रा के काम खुशी से, बिना इरिटेबिलिटी के, है ना, बिना बहुत जल्दी जल्दी थके. एंड उसका अगर ब्लड वर्क आप देखो उस इंसान का, तो दैट ब्लड वर्क शुड टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द पर्सन, कि उसका इंसुलिन लेवल कैसा है, उसका शुगर लेवल्स कैसे हैं, उसका बाकी का जो पैथोलॉजी, उसका हेमोग्लोबिन हो गया, उसका थायराइड लेवल्स हो गया, उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हो गया. देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स. Of course, एक full body checkup बनता ही है every year after the age of 35, and for women also, a lot of other tests are important, like mammography होता है, तो वो after the age of 45 is mandatory once a year. तो ऐसे लोगों को क्या है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखने से फिर इशू नहीं होता है. They know that what is their health status, because health is dynamic now, change होती रहती है. So it is same for everyone. Because achieving good health एक बहुत important चीज है. तो हम अपने काम के साथ साथ काम करें. How can we do this? Achieve good health. क्योंकि healthy रहना is totally important हमारे करियर के साथ साथ. Correct. So सबसे ज्यादा affected तो women's health ही है, मुझे लगता है. Okay. So I feel that कोई भी एक लेडी सुबह उठती है ना, तो उसके दिमाग में सबसे पहले आता है आज मेरे बच्चे के लिए क्या बनाना है, आज मेरे हस्बैंड के लिए क्या बनाना है. So I teach my clients कि please put your need first on the list. First ये देखो कि आप क्या खाओगे, आप क्या करने वाले हो आज, and what is your schedule. Prioritize yourself, क्योंकि कोई नहीं करने वाला है. So when you take care of yourself, it creates a ripple effect in the other family members also. फिर वो भी करने लगते हैं. वो वहीं पर हम लोग एक्चुअली ना थोड़ा सा लैग कर जाते हैं कि हम बाकियों की तो ख्याल रख लेते हैं, ये क्या करना है, उन्हें क्या करना है, बट उसके बाद लास्ट में कितने दिन बात जाती है हमारी खुद. साथ साथ अगर बैलेंस करते हुए चला जाए, सारी चीजें जो है वो अवॉइड की जा सकती है. आज इतना ज्यादा काम बढ़ गया है, काम की तरफ एक ही शब्द सुनाई देता है, स्ट्रेस, एंजाइटी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है. तो वो कॉमन रिलेटेड प्रॉब्लम जो आज तो ज्यादा हैं. So women are going through n number of issues, and बहुत सारे जो issues हैं वो puberty से स्टार्ट हो जा रहे हैं. मतलब गर्ल्स 11-12 years की हैं, वहीं से स्टार्ट हो जा रहा है. So they are getting their first periods. उसके बाद periods का कोई नामो निशानी नहीं. And then they have all swings, skin related issues, छोटे छोटे बच्चों को. And then weight gain हो जा रहा है, childhood obesity is on the rise. तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये इसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे. बट दिस इज वन ऑफ द इश्यूज की शुरुआत ही हेल्थ की उनके प्यूबर्टी से होती है, जहाँ पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इन यंग गर्ल्स की. क्योंकि आप बड़े होने के बाद 30-35 साल के बाद अब मेरे को कुछ कर दो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड ओवर द टाइम. So starting from puberty, these young girls are having menstrual issues. They are having either too much of bleeding or not having any bleeding at all. Then when they reach their adulthood, then of course adulthood mein they have a lot of skin and hair related issues. So सारे girls को pimples and acne का issue है. So why? Because see, skin is the largest organ in your body. आपका स्किन आपका हेल्थ स्टेटस को डिफाइन करता है. सो इफ यू हैव एनी इश्यूज ऑन योर स्किन, you should understand that body is giving you some signs, and you should know that something you have to take care of. So skin should be everything. Then these young women, when they get married, they have low libido, they have fertility issues, they can't conceive. वैसे भी कोविड ने काफी कुछ डिस्ट्रक्शन कर रखा है. So a lot of studies now tell us कि कोविड के वजह से फर्टिलिटी इश्यूज बहुत आए हैं गर्ल्स के अंदर स्पेसिफिकली.
Yes. Very true. Then these young girls have fertility issues, and then of course early menopause. Now 37, 35 is where they are Right. reaching their menopause without any other issues. So Right. it is very important now to take charge of our health. Yeah. So I Right. think these. कंपनी कहीं कहीं there was a time जब हमारी मदर और हमारी ग्रैंड मदर सब बताती थी that there was a time menstruation के लिए थोड़ा वक्त लगता था, but now activities बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा सोच बढ़ गया है, हर चीज मतलब there are so many reasons behind it, right? तो आजकल बच्चियों को ये menstrual cycle बहुत जल्दी आ जाती है, बट उसमें भी तकलीफें बढ़ गई हैं और आजकल menstrual cycle रेगुलर भी नहीं है, which causes a lot of problems, right? उसके साथ साथ जब हम menstrual cycle में होते हैं, हमारे periods शुरू होते हैं, जब government जाते हैं, उसमें भी suffer very 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 common problem. तो इसके बारे में what do you have? तो ये सब कुछ जुड़ा होता है हमारे हार्मोनल हेल्थ से. नाउ व्हाट आर हार्मोन? हार्मोन्स मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन एंड फैट्स के, और ये हमारे लाइफ में डिफरेंट तरीके से रिलीज होते हैं हर मंथ, हर एज में. ओके, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जो खा रहे हैं, हम जैसा सो रहे हैं, हम जैसा मूव कर रहे हैं, हम जैसा ब्रीथ कर रहे हैं, सब कुछ अफेक्ट करता है हमारे हार्मोनल हेल्थ. ओके, तो अगर आपने मे बी आपने हफ्ते में 3 या 4 बार आप लेट सोए हो, मान लो आप 3-4 बजे रात को सो रहे हो, so that entire month definitely you are going to have some of the other health issues. So you have to understand that in especially females, everything is regulated by the hormones. So you have to make your hormones very happy. How Right. do you make happy? By making them work in synchrony, in balance, right? So अभी ये सब कुछ हो नहीं रहा है. तो हो क्या रहा है that they are not performing well, they are going out of balance. And क्यों हो रहा है? Because there is something which is known as endocrine disruptor. मतलब हमारे हार्मोन डिस्टर्ब करने वाली हम ऐसी एक्टिविटीज पे हम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. अगर मैं कुछ उसमें से आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं तो सबसे नंबर 1 पॉइंट है plastic. The use of plastic bottles, the use of plastic dabbas and all those things, they are slowly entering our system. ठीक है, एंड मेल्स को इतना फर्क नहीं पड़ता, बट फीमेल्स हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज अभी तो एक स्टडी में ये देखा गया कि अंदर माँ के पेट में जो पानी में बच्चा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसमें भी प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक इज एवरीवेयर, दैट इज हार्मिंग आवर हेल्थ. देन योर स्लीप, अगर आप थोड़ा भी टाइम पे नहीं सो रहे हो, एंड देन द हार्मोन्स विल नॉट परफॉर्म वेल. ओके, देन ईटिंग हाई कैलोरी फूड, हाई सॉल्ट, एंड प्रोसेस्ड फूड, हर चीज पैकेट्स में आजकल बहुत अवेलेबल है, बहुत इजी हो गया है. वर्किंग वुमेन प्रेफर पैकेज फूड एंड कप नूडल्स एंड ऑल दोस थिंग्स. So please stay away from all these things. And lot of junk food and KFCs and Maggi's, all these things are processed. Yeah, they are having high amount of chemicals in them. These are slowly entering our body. So people are forgetting that all these things affect their hormones. So अगर आप रोज लोड करोगे अपनी बॉडी को ये सारी चीजों से, तो of course your health will go for the toss, isn't it? Then a lot. Sorry to interrupt, but जैसे तुमने causes बताए, the form of reason बताया ये hormonal imbalance का, but आजकल का जो working process है बहुत बदल गया है. There is not a 11 to 7 job, या फिर there are so many या कहीं ना कहीं ऑनलाइन बढ़ गया है काम, जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वर्किंग प्रोसेस बहुत चेंज. या सो बेसिकली यू आर सेइंग कि स्ट्रेस तो है लाइफ में, उसका क्या करें, वो तो वहीं रहने वाला, राइट? सो दैट्स व्हाट स्ट्रेस इज इनएविटेबल, वो कहीं नहीं जाने वाला है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर लाइफ विद दैट स्ट्रेस. So people need to learn that. That is very important for us to know कि हाँ स्ट्रेस तो रहने ही वाला है मेरे साथ हमेशा. So उसमें क्या मैं अपना प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दूं या नहीं दूं, right? So what people don't understand is that hormonal disruption इधर से भी आ सकता है. Even your simple lips can be a hormonal disruption which is chemically filled. So can we adopt something which is more natural? Can we adopt some, shampoos and, conditioners? All of these are going into your skin and penetrating inside your body. Okay? आप जो भी फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर लगाते हो, वो सब कुछ आपके सिस्टम में जाता है, and that slowly
Okay, ये एक दिन में नहीं होता है, of course it takes years, and then slowly you will see all those changes happening. कि पहले तो मेरे menses थे, अब क्यों ऐसा हो रहा है? You know, so that's when you need to rethink about what you are using. Okay. Stay away from plastic and all those things will be, you know, very important for us to understand later in the session. राइट. व्हाट आर द रिस्क, क्योंकि रिस्क जानना बहुत जरूरी है. जब तक हम रिस्क नहीं जानेंगे हम उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे. तो व्हाट आर द रिस्क ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है. तो सबसे फर्स्ट जो टॉप करता है लिस्ट में वो तो है इरेगुलर मेंसेस नाउअडेज. सो कि इसकी डेफिनेशन क्या है? ओके, तो सी एक नॉर्मल साइकिल 28 डेज टू 35 डेज के बीच में. ओके, so flow should be like somewhere between 3 days to 7 days. That's fine, that's perfectly fine. But अगर 3 days से कम flow हो रहा है, that means your body is giving you a sign. Please go and see a gynec. If your flow is for more than 7 days, then again something is wrong in the body. You have to go and see a doctor. Okay. जाना है आपको डॉक्टर के पास, because see Google and all give you a lot of information. How will you understand? True. Very true. Right? That is the problem, because we just Google it and वहीं पर हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के या फिर थोड़ा बहुत solution लेकर रुक जाते हैं. We never approach to doctors. ये मैंने हमेशा notice किया. That's the reason I think. So always I would say with this session that, you know, people should understand that, you know, there is a value of an expert and you should reach out to an expert. Yes. Very true. Our discussion will be going on, but जो viewers join कर रहे हैं, if you have any query to ask to Pankuri, तो please आप अपने queries यहाँ पर drop कर सकते हैं. Definitely we'll try to answer your questions as well. इसके साथ तो सबसे बड़ी चीज जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, and that when it comes to conceive a baby, right? इतना easy नहीं हो गया है आजकल ये चीजें, क्योंकि to conceive a baby is emotionally and mentally बहुत बड़ी चीज है. आजकल देखा जा रहा है इतने साल होने के बाद भी everything is normal, everything is normal, all the tests are normal, all the doctor visits are normal, but then the person is not having a baby, it's not conceive नहीं कर पा रहा है. What do you have to say? Is lifestyle a foremost reason for this? Yeah, so see, if you are saying that, you know, there is a girl and everything is normal inside her body and all the tests and all are okay, why is she not able to conceive? Then we have to, you know, deep dive inside her. What's going in her body? She actually needs it. Yeah, right. Emotional thing, no? People need to for it, and they need to, you know, think about it. Yeah, is she getting under some pressure from the family to do it? Yeah. Right. So things try to you know, understand the, you know, situation of a person. Yeah. So we have to understand कुछ medically connected नहीं रहेगा. There will be some things that will be emotionally connected with the person. Yeah. How is you know, her everyday activities, is she okay? Is, you know, it's fine, because काफी सारे चीजें now get unnoticed. So it can be her thyroid levels, which no one has checked before, because she's just 25 or 27 years old, and सबको लगता है thyroid अभी थोड़ी ना होता है, you know, but thyroid can happen to any person at any time. So we have to understand, you know, all the tests should be done in you know, accuracy, because कुछ भी miss out नहीं होना चाहिए with her. Very right? True. If undergoing thyroid, she will have a lot of you know, metabolic issues, weight gain issues, obesity. Then you know, of course, she might also have mood swings, depression. So सारा issues with it. In fact, abhi recent studies are telling us that vitamin D can be a culprit if, you know, a person is not able to get conceived. So if her vitamin D levels are low, then, you know, she might have fertility issues. So the simple treatment, give her a vitamin D and boom, she's, you know, conceived next month. So we have to understand what aspects we are assessing her with. Yeah. So I think gynacs will be the great, you know, experts in this and talk more about this thing. But of course, everything can be handled if you have a holistic approach and you look at all the departments, you know.
of a person's Very health. true. Yeah. Because when Yeah. person reports are normal, doctor visits are normal, the person gets depressed because this is the most important emotional part of a life, right? To have a baby, at least one baby you should have, right? So इस चीज के लिए they get very depressed. And what I think कि ये भी कहा जा रहा है कि diet plays a very important role in conceiving a baby. What do you think? What do you have to say? Because you are serving from so many years. Yeah, so of course, a lot of times people come to me that, we are trying to lose weight or we are trying to conceive and, we are not able to do. So, firstly, I ask them, what are you eating? So, either they are under eating or they are overeating. There's no balance. Okay. I hardly in 1 year, I hardly get 1 or 2 females who balanced meal lete hai. Otherwise, all of them, either they are eating very low or they are eating extreme food. Okay, so there's no in between. So we have to, identify such clients and then we have to refer them to clinical nutritionists. Okay, they do the job. Okay, Very so true. calculate the number of calories she will need, what all things she's deficient in. Okay, so for menstrual, issues and for irregular periods, we recommend to consume a lot of good, whole foods like nuts and seeds, oats, Okay. and Right. vegetables. तो ये Right. सारी चीजें आप वैसे डेली उसमें आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपको ये सारा Right. कुछ इश्यूज हो, या सो वी हैव True. टू ask them कि उनके लाइफस्टाइल में वो क्या करते हैं and then we need to help them. Because I think diet plays a very important role in our body. कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज से अगर हम बात करें तो आपके अलग अलग हेल्थ इश्यूज पे भी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. अगर हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपसे भी पूछें, बिकॉज आप ये डाइट सभी को लगाती हैं सारी द न्यू मॉमीज, द मॉम टू बी और जो कंसीव करना चाहती हैं, व्हाट एग्जैक्टली हमारा डाइट होना चाहिए एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप क्या कहेंगे? See, Meenakshi, first I tell people that no food is good or bad. Okay, you should have burgers, you should have noodles, you should have dosa, you should have idli, you should have everything. Okay, stop labeling food as good or bad. Firstly, okay, then understand, please have everything in moderation. कोई भी चीज का अति मत करो. When you do see, then the body will give you all the signs and symptoms like we have already discussed. Very true. So we have to understand that balanced meals is what you should look for. आपके थाली में सैलेड से आप शुरू करो, आपके थाली में कर्ड हो, आपके थाली में रोटी, सब्जी, राइस, दाल, घी, everything should be there. Okay, ghee and avoid all the saturated fats and oils and processed oils. So important, right? And moderation, very right. So the guidance will come from a clinical nutritionist जो आपको बताएगा कि आपको 1800 कैलोरी खानी है कि आपको 2500 कैलोरी खानी है, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्किंग. कि अगर आपका बहुत हेक्टिक जॉब है तो आपने बहुत ज्यादा एक्सर्शन करना है, सो यू कैन हैव मोर कैलोरीज एंड बर्न देम. बट इफ यू आर हैविंग 9 to 5 सिटिंग जॉब, so then you considerably need less calories from carbs and more from protein so that you don't gain your weight and you are having that energy work. Okay, so yeah, everything has that logic behind, and यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है पंखुड़ी कि वेट लॉस तो बहुत लोग करना चाहते हैं, बट ऐसे कई देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु वांट टू गेन वेट. कहते हैं कि वेट गेन करना है सो आसान, बट दैट्स नॉट ट्रू. I told you, started with that only because I am seeing such females also. Yes. So yeah, continue. So again, वाले भी clients होते हैं, and of course, this is all related to underdevelopment. So we have to go and see what the client did in, the puberty age and how was the child, the client brought up as a child. What all food they were having in the family, was the child fed adequate nutrients, है ना. एंड काफी सारे बहुत सारे जेनेटिक इश्यूज रहते हैं जो नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ inadequate knowledge and all. So then try to go deep down inside a person's well-being, and then we might help the person. Being pregnant is the most emotional part of our life.
एंड देयर कम्स कि हमारे माइंड को, हेल्थ को, दोनों को बैलेंस बनाए बहुत रखना है, बिकॉज देयर वाज अ टाइम सब कुछ बहुत इजीली हो जाता था, बिकॉज उन्हें उतना एक मेंटल सपोर्ट होता था, हेल्थ इश्यूज के ज्यादा ये नहीं थे. बट नाउ व्हेन अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट, शी गेट्स मोर देन हैप्पी. और उसके बाद जब बारी आती है जद्दोजहद की, दिमाग और हेल्थ केस में, दे गेट सो मच स्ट्रेस कि अब कैसे होगा, वुड आई बी एबल टू हैंडल ऑल दिस. आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, और यू बीइंग अ मेंटोर टू सो मेनी मॉम्स आउट देयर, what do you have to say about कि किस तरह ये सारी चीजें की जा सकती हैं, and what are the issues, common issues which are being seen today's life? Yeah. So, earlier they used to come with, back pain and leg pain in the last few days of their, due date Yes. and all. Yes. Now, Right. in the first trimester itself with a lot of back pain and knee pain, which has been seen now. So we have to understand that if you want to conceive, your preparation should, really start before you, actually True. conceive. You have to understand that, health and fitness is important. The way you are eating will impact your 9 months of pregnancy, and, correct knowledge about movement, which exercise you should do, which you should avoid, and, how will you manage your pregnancy along with your 9 to 5 job, or, a hectic job profile. So we have to train them in all aspects of their life. And here, they usually go through a lot of anxiety. They go through a lot of, mood swings, and बहुत कुछ, चलता रहता है दिमाग में कि कैसे True. होगा, क्या होगा. So the only thing to get out of all these things is education. है ना, अपने आप को education देना बहुत जरूरी है. So That's we true. provide child education classes wherein we Okay. prepare them everything. Yeah, we prepare them for we prepare them कि अगर आपका C हुआ तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका vaginal birth हुआ तो आप क्या करोगे, right? क्या So we have करोगे? to prepare Right. context. Then we prepare them for the newborn baby care. ठीक है, because हर चीज update होती है. Okay, it's Very true. 2022. We updated. So Yes. the way you massage your, the way you put the baby to sleep, the way you are, nourishing your baby, everything has been updated. So a new Right. mom needs to get this knowledge. Okay, क्योंकि Right. अभी Right. to your पड़ोस वाली aunty and follow everything. It's, Actually, high. that not help. Actually, it not helps पूरी तरीके से, right? थोड़ा बहुत it can Yeah. help, but पूरी तरीके से can't help. Yeah, because see, True. what they worked on them, it might not work on you. So it's Actually, very yes. Very true. How do you help pregnant ladies? Because you have been into this from last 10 plus years. So what do you think कि बहुत common ऐसी कौन सी तकलीफें हैं जो लेकर आती हैं the pregnant ladies or the mom to be's? So ऐसी कौन सी चीजें हैं? They have a confusion. basically there is, people don't understand that, where should they go first. So if they are going to Okay. their gynec, a lot of times, a lot of questions of theirs get unanswered. तो उसके वजह से फिर, Right. then they try to Google, and then they follow few exercises by seeing the YouTube videos, and then they land up into Right. issues. Then they land up into Okay. pain, injury, and Okay. then they reach out to a physiotherapist. So that's how people are trying to, come. But I would suggest that, they should come directly to a physio, because physios are exercise specialists, and they will help you in designing a, safe workout plan for you, which suits you and your capabilities, right? So that's how it should be done. And yes, slowly awareness is, increasing. And mothers somehow feel that, they need to get out of the house and, move some new people, especially when they are pregnant. So that's why joining prenatal exercise classes, will be, great for them to include other mothers, Right. and, to Right. workouts, Right. along with the other mothers. So that's how we help mothers, giving them a space wherein they all feel in one boat. Very true. And Very we basically provide exercise sessions. We provide all the theory classes for them, the Okay. Lamaze class, childbirth education classes. So we involve the husband, involve the mother-in-law. We also involve the nanny. Yeah, That because is so good.
yeah, she's going to be there, she's going to help the new mom. So उसके अपने फंडे नहीं होने चाहिए. She should also be with us in the same So boat. true. That's how, So we the entire family. So because right. I saw this over the time that सिर्फ mother को train करके you will not get Actually, much. I this have is so to educate good. the family. So that's Right, how right. we, yeah. Because it is I think not a job of a mom itself, right? हर किसी का अपना अपना एक part is very important. जहाँ एक वुमन प्रेग्नेंट होती है, व्हेन अ वुमन डिलीवर्स अ बेबी, उसके लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट आई थिंक उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली का होना चाहिए. बिकॉज नाउ डेज वुमेन्स आर इनटू लॉट ऑफ प्रेशर और उस वजह से एवरीथिंग गेट्स मिस्ड अप. सो वहां पर आई थिंक द वुमेन शुड be helped by its her family, or सबसे ज्यादा I think husband should be trained about this, right? From changing a diaper to feeding a baby, right? I think this should happen, and you are playing such an Uh, important role. so there was a recent study done on, Mm-hmm. the exclusivity of breastfeeding. तो उसमें देखा गया कि जो को उनके husbands ने support किया to breastfeed, their rates were very high for exclusive breastfeeding. So Okay. those who were not supported were usually formula feeding, and they couldn't breastfeed. So that Acha. this was a study done. So Right. I think this should change, and I think it's changing day by day, and it should be like this. yes, I want I to found. I want to jump on the topic of breastfeeding, but before that, I think I should discuss about menopause, because that is where बहुत सारी viewers हैं who are women and who are in the age. अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं regarding women health issues, कोई भी, please don't hesitate. आप पूछ सकते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, Pankudi is there to answer. Pankudi, मैं ये कहना चाहूंगी कि menopause nowadays comes at a very early age. What is the reason behind this? What do you have to say about this? Again, hormones. Okay, so a woman's health is defined by her hormones, और hormones को डिस्कस करने वाली बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं. ओके, सो स्टार्टिंग विथ ड्रिंकिंग टी और कॉफी एम्प्टी स्टमक बंद कर दो. Oh, so because if you are a female and you are drinking tea and coffee empty stomach in the morning, you should stop not it from be doing. tomorrow. Because what it does is it will of course increase the inflammation in your body. Okay, आपके cells जो है Okay. वो perform like the way they should, and it will create a lot of acidic reaction in your body, starting in the morning itself. So in the morning, Okay. there should be something that is very alkaline that you should consume. Okay, so it can Okay. be your warm water, it can be your lemon juice, or it can be your breakfast. Simple, start with your breakfast and then have your tea after 10 to 20 minutes after your breakfast. So Okay. a lot of my clients has reported that this simple change has made them feel fresh for the day. They are less bloated, don't have acidity issues. In fact, अगर किसी को कहीं पेन भी होता है बॉडी में, so even that subsided, because sometimes pain increase with acidity in your body. So Right. simple changes you have to do for your lifestyle management. Nothing. Sure. Then stop using all the chemically laden cosmetics. That will give you a good hormonal balance. So आपका menopause जल्दी नहीं आएगा, and you'll be enjoying your health, and Right. stop using shampoos also which have chemicals. Basically go with natural. बहुत सारे हैं available market. पहले शायद नहीं होते थे, but now अभी there are lot Now there are brands. so many options. Very true. Very true. Tell your doctor also not to use all these things and avoid packaged foods. I feel हर चीज घर में हो सकती है. Go in the kitchen, enjoy cooking with your family, and that's the way you bond also. So I think that's Very how true. you should. Yeah. The first thing, and from the first session of my Instagram live, I will be doing is कि I'll be stop drinking tea and coffee first thing in the morning. Very true. That creates a lot of. So yeah, even I was like that. So I used to have 1 cup of dark coffee as soon as I used to get up, and then the day I've left it, I've seen huge results. I've seen huge changes in my body. And being a Vidarbhian and being a Nagpurian,
so many people are die hard chai fan. मैं नहीं हूँ, I am a coffee person. But ये जो चीज है, ये कहते हैं कि नींद उड़ाने के लिए या नींद खोलने के लिए, there are so many reasons to have a cup of tea and coffee. I think पंकुड़ी ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले first thing in the morning you should have a lukewarm water, or you can have anything, you can have your breakfast as well, but चाय और कॉफी आप पिए तो उसके बाद पिए। सबसे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप ये ना करें, क्योंकि इससे आपके हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। मेनोपॉज की जो बात आती है, पंगड़ी, मेनोपॉज के बाद there's lot more changes in your body, there's lot more health issues come in getting in an invitation by itself. तो ये जो चीजें हैं, what do you have to say कि what exactly can we do to tackle this? तो मीनाक्षी, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका मेनोपॉज कैसा है, वो आपका प्यूबर्टी, आपका एटीट्यूड, आपका प्रेगनेंसी, आपका ब्रेस्ट फीडिंग कैसा गया उस पर निर्भर करता है, फ्रैंकली। नाउ इफ यू फील, I'll explain you in a simple way कि अभी एक recent study हुआ था जिसमें ये पता लगा था कि that mothers who breastfeed have good bone during their menopause, तो उनको osteoporosis नहीं होती। Okay, then there was also the finding कि mothers who breastfeed protect themselves from brain attack and brain stroke and heart attack। ठीक है, पीछे बहुत सारे reasons है, and these are the researches of big universities. They are not funded studies, they are real-time studies using a lot of sample size from around the world. ठीक है, तो you have to understand there should be some truth behind this, and that's why we have to understand that whatever phase we are in, उसको अच्छे से we have to spend the time and energy to maintain our health. So if you are a girl, young girl, started your menses, take care of your health. You know what you have to do, balance, your lifestyle, stay away from stress, eat on time, eat balanced meals, exercise. Okay. Then, if you are, a young girl just married, so definitely in 1 or 2, 3 years, you are going to conceive. So start planning for, your health now only. Try to eat a lot of fruits and vegetables, stay away from all the stress and, manage it, and, try to basically prepare yourself. Then, if you are already pregnant, then, you have to again eat wisely and, focus on correct exercises. Then, after that, breastfeed properly and aim for breastfeeding your baby, because it's not just beneficial for the baby, for you, okay? Also, research बताता है that mothers who breastfeed protect themselves from uterine and breast cancer, also breast cancer. तीनों cancers से mothers को जो है, ये मिलता है. So why not? Then why not, right? So we have to help the young moms to breastfeed. So that's what we do. I'm a lactation consultant. So then when you are in your menopause, you have to understand that there is a role of strengthening. तो आपको weight lifting, weight training करनी ही है, because if you are in your menopause and you are going to go for Zumba every day, it will give you a lot of injuries. It will not, give you the results that you are looking for. So when you are trying to reach menopause, you have to do a lot of muscle strengthening exercises, relaxing, exercises like yoga can also be included. Simple, walking is also very nice. Cycling is good, Bike तो एक घर पे बाहर नहीं जा सकते हो, so try to find out ways कि आप घर पे क्या कर सकते हो, right? So घर पे you can get a pair of dumbbells and you can get started. You can use your yoga mat to do yoga. So like these are very important. Yes. So focus on quality, not on quantity. आपको 2-2 घंटा workout नहीं करना. Small goals. Workout 3 times a week. That's it, what you need. So the American College of Sports Medicine recommends workout 3 times a week, maybe 150 minutes per week. That's a target is. Complete karo. Okay.
The new thing I am trying is you can walk at the same place. एक ही जगह पे you can walk and you can have a good exercise, I think, and that you can also try because it's working for me. It's a good thing. आप बहुत ज़्यादा उसमें ये कर सकते हैं. ये एक क्वेश्चन आया है पंकुरी बिफोर जमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या वजह है कि बेबी कंसीव ना करने के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं? Hormonal health, poor lifestyle, poor eating habits, नॉलेज नहीं है क्या खा रहे हैं कब खा रहे हैं, यू नो. सो एज आई टोल्ड यू, एम्प्टी स्टमक कॉफी इज वेरी वेरी हार्मफुल, जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है. देन यू नो, ईटिंग द रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस. ठीक है, बहुत सारे लोग जैम लगा के खा लेते हैं, यू नो. सो इज दैट एन आइडियल ब्रेकफास्ट? नो, इट इज नॉट. सो आपके डाइट में फाइबर्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए. मैंने देखा है पीपल डोंट बाय फ्रूट, they miss out on fruit. Yes, fruits have so many micronutrients, right? So we have to understand that your diet should have at least one banana. Yeah, one banana for every female is important every day. It has so much of calcium, so much of, you know, calcium that will help you to stay focused throughout the day, give you energy. Yeah, including dry fruits, है ना? So almonds, and cashews, all have so many different, you know, food that we need. I think everything thoda is important in our diet. May it be dry fruits, may it be fruits, may it be salad, may it be a full meal, right? हम सब खाना अच्छे से खा लेते हैं तो we avoid fruits because हमने खाना बहुत अच्छे से खा लिया है. But I think everything. Yeah, roast bread, butter, bread, jam, you know. So you should rotate your diet and, you know, you should enjoy all the things. Why only one? हमारा एक्चुअली माइंडसेट है कि हमें पेट भरने के लिए खाना है. वी नेवर ईट फॉर आवरसेल्फ. हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं. दैट्स ट्रू, राइट? कमिंग अप टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट्स ब्रेस्ट फीडिंग जितना बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए इम्पोर्टेंट है, आई थिंक उतना ही शायद एक मॉमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट. व्हाट यू हैव टू से, बिकॉज कहीं ना कहीं देयर इज अ डिफरेंस पहले के और अब के टाइम पे. आई हैव सीन, एंड बीइंग अ मॉम माई सेल्फ, आई हैव सीन कि पहले लोग 2-2 साल तक ब्रेस्ट फीड कराते थे, बट अब कहीं ना कहीं देयर इज अ लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और अब उतना आता भी नहीं है. लाइक लोगों को उतना लैक्टेशन का प्रॉब्लम है. यू बीइंग इनटू दिस एंड यू हैव सीन सो मेनी मॉमीज आउट देयर, व्हाट यू हैव टू से कि कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन इट बेनिफिट अ वुमन, अ न्यू मॉम? See, basically breastfeeding is all about a mother's determination. ठीक है, हर किसी के पास तो lactation consultant पहुंच नहीं सकता, but if she is determined, she will herself take the baby to her and breastfeed. That's how beautiful it is and natural it is. But sometimes sitting बहुत बढ़ गया है, तो mothers जो है पूरे 9 months अगर you know they are doing that sitting job, तो sitting की वजह से a lot of growth issues are happening. मतलब not some big genetic issues, but babies born with height these days, they have a lot of muscular tightness. Okay? So they you know, the impacts are seen in breastfeeding them. So इसको जो है pain होता है breastfeeding, you know, they don't pain, है ना, तो घंटों breastfeeding चल रहा है, but फिर भी baby is not getting full. Issues that they go through. Right. इसका बहुत सारे, you know, we can help, we can give them बहुत सारे solutions for this. Right. Breastfeeding can also happen if you know, give your pumped milk to the baby. So don't feel, you know, you are doing something less by not directly breastfeeding, because you are working, you want to breastfeed. So why not give the baby your pumped milk? That's a very good option instead of formula. Right. But how can we increase our lactation issues? Yeah. How can we increase? क्योंकि आजकल देखा गया है कि वुमेन्स में ब्रेस्ट फीड या फिर एक नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता है. It is not creating. What is the reason behind this? If you want to breastfeed your baby after your delivery, the preparation starts in pregnancy. 9 months का जो टाइम आपको दिया है naturally God ने, that is the time for you to prepare yourself for the coming days. So we forget and we are like, मुझे तो मेरे delivery के last day तक के I need to go to my office and I want to tell everyone that, you know, I worked at the last day. So that's the race.
So I suggest ki, if you can and your circumstances allow, please take leave, 1 month before and sit back and relax and enjoy and educate yourself about all the things that we talk. True. Yeah. So that will help her to reach to a better way. So prenatal education classes हम करते हैं, wherein we prepare the moms. Right. So I took classes for Nagpur clients, for clients sitting in Singapore, Dubai, Abu Dhabi. They all are connecting with me now. Right. So that's how it be done from your comfort of your home. So it's very easy now. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. Very Right? true. So Very true. think that 9 months of time wisely. Don't just go about it like that, right? So that's how you prepare. Very That's how true. you avoid all the breastfeeding issues. Very true. That was such a informative session. But एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसे लास्ट में कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. छोटा छोटा ब्रीफ हर किसी चीज के लिए. सबसे पहले hormonal imbalance, which is a common issue nowadays, and due to hormonal imbalance, जैसे कि हमने अपने सेशन में जाना कि hormonal imbalance के वजह से there are so many issues and so many health issues are coming up. What do you have to say, tips for hormonal imbalance? Yeah, so issue, I think. Yeah. So see, to enjoy good health, you should start by focusing on your lifestyle. Stay away from all the toxins, chemicals. Plan your meals. Yes. Exercising is so much underrated. Please start with 20 minutes of exercise 3 times a week. पंखुड़ी को फिर से इनवाइट करने की कोशिश करती हूँ. I have already invited her. She's yet to accept. So I am extremely sorry. बहुत wonderful session चल रहा था. I have shared that session on my feed. So जिन्होंने भी miss किया, please go through it, and थोड़ी सी कुछ छोटी मोटी बहुत important tips जो हैं वो बाकी रह गई हैं. So I have sent an invitation to Dr. Pankhuri. Let's see वो accept करती हैं. Then we can just jump on to the topic and then we'll end up this session. So guys, it was a very, very informative session with Dr. Pankhuri Multani Khemani. She is actually a physiotherapist, health expert, women's health expert. So the new mommies out there, जो भी इस journey में नहीं है, being a mother, तो आप उन्हें कंसल्ट कर सकती हैं. I have tried inviting her, but I think she is blind due to my bad Wi-Fi behavior. मेरा लाइव जो था वो बीच में ही बंद हो गया. बट वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन. बस लास्ट का सिर्फ एक गुड बाय बचा था एंड द टिप्स फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस. एंड यहाँ इस सेशन में वी हैव डिस्कस अ लॉट मोर थिंग्स अबाउट वुमेन्स हेल्थ इश्यूज, जहां पर वी हैव टॉक अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, वी हैव टॉक अबाउट मैटरनल इश्यूज, वी हैव टॉक अबाउट वेट जर्नी, वी हैव टॉक अबाउट हाउ टू गेन वेट, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि PCOS एंड PCODs क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है. There is a lot of issue girls are facing, women are facing when they are in the menstrual cycle. periods के दौरान बहुत ऐसी तकलीफें हैं जो वो फेस कर रही हैं. उसके साथ साथ irregular periods is बहुत कॉमन हो चुका है. तो irregular periods क्यों होते हैं, एंड इसके साथ साथ there are so many women out there who are unable to conceive after so many years. हर चीज नॉर्मल होने के बाद भी all reports are normal, doctor visits are normal. So हर चीज नॉर्मल होने के बाद भी they are unable
टू कंसीव। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और जैसे कि पंखुड़ी मुल्तानी बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, आई हैव शेयर्ड दैट लाइव सेशन ऑन माय फीड। अगर आप लोगों ने मिस किया तो आप वो लाइव सेशन बिल्कुल देख सकते हैं जाके। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट टू डॉक्टर पंखुड़ी मुल्तानी, तो मैं उनका जो आईडी है वो टैग कर दूंगी उन्हें, एंड यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट। बहुत अच्छी हैं, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती हैं। शी इज वंडरफुल वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट, एंड कहीं ना कहीं आई वुड से कि फिट मॉम प्रेगनेंसी वेलनेस सेंटर विच इज इन बिरामजी टाउन नागपुर। सो अगर आप न्यू मॉमी बन रही हैं, यू आर न्यू मॉम टू बी, तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली जाकर डॉक्टर पंखुड़ी को अप्रोच कीजिए, एंड एक फिट मॉम बनने की आपकी भी इच्छा है, आई नो। तो आप एक फिट मॉम कैसे बन सकती हैं, और आपके फैमिली को भी किस तरह का एक एजुकेशन मिलना चाहिए एक बेबी आने से पहले, इसके लिए आप Fit Mom Pregnancy Wellness Center. Dr. Pankuri Multani is a founder. So go and approach her, go and connect her. And it was a wonderful session. Thank you so much for joining in. आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना इस सेशन को, और अगर जिन्होंने मिस किया, I have shared that live session on my feed. Go and check it out. वेट करेंगे नेक्स्ट संडे का कि नेक्स्ट संडे में ऐसा कौन सा टॉपिक लेकर आ रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन होने वाला है। सो प्लीज डू नॉट मिस दैट। Turn on the notifications and please share this sessions to the person who needs it, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई friends होंगे आपके, ऐसे कई family होंगे, relatives होंगे who need to know all these things, जो जिनके यहाँ बहुत प्यारी सी एक जर्नी शुरू होने वाली है। And the girls out there and the women out there who are actually facing so many health issues, so please आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। And if you need something, do let me know. You can DM me on my ID. And those who have not yet followed me, please do go and follow, because मैं बहुत important sessions और बहुत important discussions लेकर आने वाली हूँ। So please do follow, share this account with your friends and relatives. And इसके साथ, if you have something you want me to have a discussion on this on my live session, so please you're welcome. Drop in my DM में आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कौन से topics हैं जिस पर आप चाहते हैं कि मैं discussion करूं, interview करूं with the expertise. I'll definitely gonna do this. And if you have any queries, you're welcome. You can drop your queries on my DM. That's it for today. मिलेंगे अगले संडे किसी और expertise के साथ। तब तक के लिए bye bye, take care, शब्बा खैर।